Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, today we are going to start with another short story of Class 10 ICSE, that is The Pedestrian by Ray Bradbury. So if it's wondering about the previous short stories, so there are 5 short stories in the syllabus and we have covered already 3 short stories, The Elevator with the Photographer and The Girl Who Can on the channel. You can go check it out in the playlist of English Class 10 ICSE. And today we are going to start with the 4th short story, that is The Pedestrian. Right, so it is written by Ray Bradbury, and if we talk about, we should always, before starting the chapters, before starting reading the chapters, and even understanding, or even if you are preparing for your exams, always read this about the author first, because there are certain things you can get about your information from it. You can get a summary of the chapter, like what is the chapter about. Other thing what you can get from here is you can get some good words to frame your answers, right? So you should always read about the author before starting the chapter, right? So Ray Douglas Bradbury, it is the name, full name of the author. So was one of the most celebrated 20th century American author and screenwriter. So he was most celebrated, he was famous. So he was famous, celebrated. Celebrated basically means कि वो जाना माना. He was known. सबको लगता था कि हाँ उसकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. If we compare it, he worked in a variety of modes, including fantasy, fiction, science, हॉरर, मिस्ट्री एंड रियलिस्टिक फिक्शन. तो उसने काफ़ी सारी जगहों पे काम किया, मतलब काफ़ी सारी फील्ड्स में अपनी स्टोरीज लिखी. जैसे अगर उसने फैंटेसी के बारे में भी स्टोरीज लिखी, उसने फिक्शन के बारे में भी स्टोरीज लिखी, तो उसके जो यॉनर थे, यॉनरा, वो काफ़ी सारे थे. बहुत सारे डिफरेंट यॉनरा में उसने स्टोरीज लिखी हैं. द पेडेस्ट्रियन सेट इन अ डिस्टोपियन फ्यूचर. ना डिस्टोपियन क्या है? Dystopian. So dystopian is basically, if we talk about, opposite of utopia. Utopia is basically a perfect place जो आपकी dream place होती है. So dystopia is basically a opposite of that. That ऐसा एक वर्ल्ड बन चुका है, डिस्टोपियन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर ऐसा हो चुका है कि नोबडी इज केयर अबाउट एनीवन, एवरीवन इज इग्नोरेंट. तो इसलिए दैट ही सेज कि डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में लिखिए, दैट व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट फ्यूचर है. सो इट इज लाइक nobody is like wanting to remain in that future because it's dystopian. Opens where even going for a walk is seen as an aberration. Aberration means abnormal. So ये he says कि एक ऐसा फ्यूचर है, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसा टाइम पीरियड उसने शो किया है कि फ्यूचर में एक अगर कोई एक इंसान अपने घर से सिर्फ वॉक करने के लिए भी निकला है तो उसे एक एबनॉर्मल एक्टिविटी मानी जाएगी. Meg is picked up, questioned, and sent off to an asylum. Asylum here is a mental hospital. So he says because of this activity that he is walking on the roads, just walking, he is picked up, he is being questioned by the police, and then he is sent to be a mental hospital, saying that he is not in his mind. वो अपने दिमाग में नहीं है, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, just because he was walking. तो walking करना भी एक mental problem show की गई है in the future. And the person, the protagonist of the story is going to be Med, Leonard Med, that is written here only. His misdemeanor walking about alone, which is considered regressive. So his personality of going for a walk, enjoying the nature, is considered as regressive. Regressive is old school. So it's like कि तुम्हें कोई कह रहा है कि तुम क्या पुराने ज़माने वाली बातें कर रहे हो. सो दैट इज़ व्हाट सेइंग कि एक वॉक करना जाना भी उसकी अपनी जो हैबिट है, उसकी अपनी जो यू कैन से लाइकनेस है कि उसका क्या पसंद है. ही लाइक्स गोइंग आउट फॉर अ वॉक, एंजॉइंग द नेचर, लुकिंग अराउंड. ये सब उसे रिग्रेसिव टेंडेंसीज के बारे में कहा गया कि ये तुम्हारी रिग्रेसिव टेंडेंसीज है, ओल्ड स्कूल टेंडेंसीज है, ये तुम्हारी पुरानी, पता नहीं तुम क्या पुराने ज़मानों वाली हरकतें कर रहे हो. That is basically what is being taught. The story depicts the dangers of isolation and absence of community. So इस स्टोरी से हमें क्या पता लगेगा कि कैसे this technology is going to be so much
वी आर गोइंग टू बी सो मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी बेसिकली, कि हमारे जो कनेक्शंस हैं, हमारी जो कम्युनिटी है वो सारी स्टॉप हो जाएगी। हम लाइक आइसोलेटेड रहने लग जाएंगे, अकेले रहने लग जाएंगे। वी विल नॉट बी हैप्पी कि कोई हमारे साथ बात करे। वी विल बी indulged in ourselves only. So हम अपने आप में ही बहुत मस्त रहेंगे because of the technology we have. So एक कम्युनिटी की एब्सेंस के फियर को दिखाते हैं कि क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। This is a prophecy of what might happen if we continue with our increasingly self-obsessed, self-contained life. So this is basically a picture of what can happen in the future, कि अगर हम जैसे अभी हम जी रहे हैं, अपने आप में ही खुश हैं, टेक्नोलॉजी अभी तो if we talk about this story, it was written a long time ago, before technology was so much, we had so many innovations, right? So अभी तो इनोवेशंस आई भी नहीं थी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें अभी आई भी नहीं थी, दे वर नॉट इवन डिस्कवर्ड व्हेन दिस स्टोरी वाज रिटन। तो तब के लिए तो उसने कहा कि अगर हम अपनी जैसे हम अपने आप में मस्त है, वी आर सो सेल्फिश, उसके हिसाब से। लेकिन आज की इफ़ वी टॉक अबाउट टुडेज जनरेशन, सो इट इज़ श्योर कि वो सेल्फ ऑब्सेशन क्यों है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी हैव टुडे। The narrative is chilling wake up call. Wake up call, chilling wake up call is a final bell कि you should start focusing, you should start paying attention to what is happening all around your world, or around you in the world, because sometimes our actions might lead to something which should not be there, right? So this self contamination, this self obsession with the technology and everything, we can say that this is a wake up call, that if we will not stop being so much indulged in the technology, this might be the truth of the future, right? So this might become truth, and this might all happen in the future, and then you will be all be like, oh, we get deja vus. Deja vus is like basically you are getting like, we have seen this before, we have thought of it before, because somebody has already predicted it, that this might happen if we don't stop being self-obsessed and being with so much indulged into the technologies, right? That's it about the author. Now let's start with the chapter. So the Pedestrian, written by Ray Bradbury. To enter out in the silence, into that silence that was the city at 8 o'clock of a misty evening in November, to put your feet upon the buckling concrete walk, to step over grassy seams and make your way, hands in pockets, through the silences, that was Mr. Leonard Met most dearly loved to do. So this is basically the setting of the chapter, if we talk about. So the chapter is set in an November. Misty means there is a little bit of frost, so the atmosphere, the environment is cold, you are there, the environment is misty, and it's around 8 o'clock in the November evening. So he says that city is very quiet, बहुत साइलेंस है पूरी सिटी में। इट वॉज 8 o'clock ऑफ अ नवंबर इवनिंग। थोड़ी सी ठंड भी है, बिकॉज नवंबर का महीना में ऑब्वियसली ठंड रहेगी। एंड you have to get buckling concrete. So this is basically, you can say, this is concrete. Buckling and concrete are two different things, right? So what we say over here, that it is an oxymoron, where two different things, two opposite things, two opposite words come together to describe a particular thing. So he says that the concrete, the walk, the footpath is made up of concrete, that is cement, but it is buckling, it is somewhat shaking as well. So to step over the grassy seams and make your way. So he says कि ग्रास पे चलना, अपनी रास्ता बनाना, ग्रास पे चल के, सॉफ्ट सी ग्रास पे, अपने पॉकेट्स, हैंड्स को अपने पॉकेट्स में डालना, एंड सारी जो सिटी की साइलेंस है उसके थ्रू पास करना, दैट वाज समथिंग मिस्टर लियोनार्ड मेड, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, most dearly loved to do. He loved doing this. He was so, it's only, you can say, if we talk about hobby, was to just walk
walking was his hobby, and he loved doing this. The silence all around, he enjoyed the nature basically, right? So he would stand upon the corner of the intersection and peer down long moonlit avenues of sidewalk in four directions. Now there was a point of intersection. He would stand there and look down all around, that which path he should go. So it was moonlit, means it was basically the light of the moon only. Everything was dark. Everything was dark. It was just the light of moon that was making him able to see. सिर्फ वो moon की light की वजह से ही देख पा रहा था. Otherwise it was very dark around. And from the point of intersection वो खड़ा होके देख रहा है कि उसे कौन सी path पे जाना चाहिए. What will lead to his destination today, right? So in the four directions of the sidewalk, deciding which way to go. But it really made no difference. He was alone in the world of AD 2053. So he says, चाहे पर वो जिस मर्जी पाथ पे जाता, it would have created no difference because वो तो अकेला था. He was alone. Nobody was out. तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि he was going to meet someone. He used to be alone. Further you come out to know that he had no wife, he had no children, he had no family, right? So he was basically a lone person. So it doesn't really matter कि वो किस तरफ को जाता है, because nobody was waiting for him. He was not decided of his destination, right? So it says that it doesn't matter where to which path he decides to go, because he was alone. And what is the year here? It is AD 2053, 2053. Or as good as alone, with a final decision made, a path selected, he would stride off, sending patterns of frosty air before him like the smoke of cigar. Now, अच्छा था वो alone था. He used to feel that I am alone, I am good alone, rather than being someone who is so indulged in the technologies, or even you can say in their own lives, that they don't care about you. So he says, I am good alone. And he made a decision that he selected a path, and he would stride off, means he would walk with long steps. Very slowly he was striding off, sending patterns of frosty air. So we have all experienced this, that जब भी थोड़ी ठंड होती है, when we open our mouths to talk, we see some kind of you can say frosty air coming out. So we do that like that. So वो चीज जो उसको वाइट सी फॉग से दिख रही थी अपने मुंह के आगे से, मुंह खोलने से, तो इससे कि उसने उसके पैटर्न्स बनाने शुरू किए अपने मुंह से, जैसे बेसिकली लोग सिगरेट्स के साथ करते हैं. Sometimes he would walk for hours and miles and return only at midnight to his house. So कई बार क्या होता था कि वो इतना मतलब उसको चलते चलते उसको इतना मजा आता था. He liked it so much, he enjoyed it so much कि he used to come at home at 12 in the midnight. So वो उसे रात के 12 बज जाते थे घर आते आते. And on his way he would see the cottages and homes with the dark windows, and it was not unequal to walking through a graveyard where only faintest glimmers of firefly light appeared in flickers behind the windows. A very, very, very important paragraph over here. It says that this paragraph basically depicts what he sees, what he observes when he is on his walks. So क्या क्या observe करता है अपने walks पे, is basically इस paragraph पे question आ सकता है that what he used to see while on his way to his walks, or what did he notice, what did he observe. तो कुछ भी question, this is an important question that can be framed from here, right? So he would see cottages and homes with dark windows. So the windows were dark. Like dark windows means there were curtains over them, right? Dark windows obviously means there were curtains drawn, okay? And it was not unequal to walking through a graveyard. It says that it was like if he was walking through a graveyard. Why graveyard? Because everyone there was silent, monotonous, and there was no one talking, there was no sound, it was dark, it looked like no one lived there. So it was equal to a graveyard, right, where only the faintest glimmers of firefly light appeared in the flickers behind the windows. So
only he could see a little bit of light coming out of the windows, where like if we see जुगनू, अगर हम बात करें तो जुगनू जैसे थोड़े बहुत ब्लिंक करते हैं, like that he could see a little bit of light flickering coming out of the windows. Now he says that sudden grey phantoms seemed to manifest upon inner room walls where curtain was still undrawn against the night, or there were whisperings or murmurs where a window in the tomb-like building was still open. So he says that sometimes he could like feel like there were grey phantoms, there were ghosts. So like he said कि ऐसा लगता था कि थोड़े से कुछ ना गोस्ट है आसपास। कई बार जब ही वुड सी कि किसी की विंडोज जो है वो उस पर कर्टन्स ड्रॉ नहीं हुए हुए, सो अगर कर्टन्स किए नहीं हुए किसी ने तो ही कुड सी कि लोग ना बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपनी गेम्स खेल रहे हैं। सो इट लुक लाइक कि कोई ग्रे फैंटम्स थे। ग्रे is used here because it is so boring, lifeless. It symbolizes loss of joy, liveliness, all that, right? यहाँ उसे कई बार कुछ विस्परिंग सुनाई देती थी या मर्मर्स, घुसपुस करने की आवाज़ें आती थी, बेसिकली फ्रॉम द प्लेसेस जहाँ पे शायद कहीं पे गलती से कोई विंडो खुली रह गई हो हाउसेस में, ठीक है। मिस्टर लियोनार्ड मेड वुड पॉज, clock his head, listen, look, and march on his feet, making no noise on the lumpy walk. He said वो रुकता था, अपना सर हिलाता था, and then he would see his watch. So he would turn his head, look at the clock, see the time, and then look, listen, ध्यान से सुनता था कि किसी के घर से क्या आवाज़ आ रही है। He would look around and then फिर वो चलना शुरू कर देता था। एंड ऐसे चलता था कि उसकी जो पैरों की आवाज़, हमारी जो वॉक, लंपी वॉक मीन्स हेवी क्लमजी, धीरे धीरे चलता था, तो ऐसे चलता था कि उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी उसके पैरों की। फॉर लॉन्ग अगो ही हैड वाइजली चेंज टू स्नीकर्स व्हेन स्ट्रोलिंग एट नाइट, because the dog in the intermittent squads would parallel his journey with the barkings if he wore hard heels. So what he said कि उसने काफ़ी टाइम पहले ना बहुत समझदारी की थी कि वो उसने स्नीकर्स पे चेंज कर लिया था फ्रॉम वेयरिंग हार्ड सोल वाली हील्स वाले शूज़, क्योंकि जब भी वो चलता था इट वुड मेक नॉइज, एंड अगर वो नॉइज आते थे तो जो जगह जगह पे डॉग्स बैठे होते हैं, तो एल इंटरमीडिएट मतलब पर्टिकुलर प्लेसेस पे जगह जगह छोड़ छोड़ के डॉग्स बैठे होते हैं, तो वहाँ पे डॉग्स जो बैठे होते थे वो पैरेलल करते थे उसको, मतलब उसका पीछा करते थे बेसिकली। तो अगर उसका पीछा कर देंगे तो ऑब्वियसली ही वुड बी स्कैर्ड कि कोई काट ना जाए कुछ, सो ही चेंज टू sneakers because hard heels क्या है, you would make noise and lights might click on, और अगर किसी के पीछे डॉग पड़ गया तो डॉग्स विल बार्क करेंगे तो लोग बाहर आ जाएंगे, लाइट्स चलने लग जाएंगी, एंड फेसेस माइट अपीयर, लोग बाहर आ जाएंगे ऑन द स्ट्रीट एंड बी स्टार्टल्ड बाय अ पासिंग लोन फिगर हिमसेल्फ, और उन्हें शौक होगा कि क्यों एक इंसान अकेला ऐसे स्ट्रीट्स पे चल रहा है, राइट। सो हिमसेल्फ इन द अर्ली नवंबर इवनिंग, कि एक अर्ली नवंबर इवनिंग पे क्यों एक इंसान बस चल रहा है अकेले, वो भी स्ट्रीट पे। On this particular evening, he began his joy in the westerly direction. So he decided to go in the westerly direction towards the hidden sea. तो वहाँ पे एक sea थी basically, तो उसके towards जाने के लिए वहाँ पे वो उसने path choose किया। There was a good crystal frost in the air. The wind was cooled. तो उसे ice crystals भी दिख रहे थे कहीं कहीं। It cut the nose and made the lungs blaze like a Christmas tree inside. तो उसको like if we always see कि हमें ठंड जो है हमेशा नोज पे सबसे पहले लगती है, सो इट कट द नोज, उसे एकदम से इफ से कि उसका नाक ठंडा पड़ गया एंड लंग्स ब्लेज, जैसे उसने सांस ली अंदर, तो ऐसे उसे अंदर ऐसे फील किया कि जो उसके ब्रोंकाइज हैं वो एक क्रिसमस ट्री की तरह फ्रॉस्ट से जम चुके होते हैं। इफ वी सी हमारा कुछ जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाइज है सारा कुछ, दैट लुक्स like somewhat like a tree branches. So Christmas tree में क्या कहते हैं, frost जम जाती है, तो it look like कि Christmas tree के अंदर frost जम चुकी है when he was just breathing. So inside you could feel the cold light going on and off, all the branches filled with invisible snow. So it says कि उसको ऐसे अंदर लग रहा था कि लाइट जो चल रही है बंद हो रही है। लाइट इज बेसिकली द
एयर, सो एयर आ रही है जा रही है, एयर आ रही है जा रही है, तो लाइट चल रही है बंद हो रही है, एंड ही कुड फील द ब्रांचेस फिल्ड विद स्नो, तो ब्रोंकाइल्स उसके जो ऐसा लग रहा था उसे कि स्नो से भर चुके हैं, वो उसे फील कर पा रहा था. He listened to the faint push of his soft shoes through autumn leaves with a satisfaction and whistled a cold, quiet whistle between his teeth. So he says, उसने लीव्स को, क्योंकि ऑटम सीजन है तो लीव्स ट्रीज अपने लीव्स को शेड करेंगे, तो ऑटम लीव्स वैसे भी थोड़े से क्रैकलिंग साउंड आती है, तो ही सेज कि ही पुट ऑन ही स्क्विश्ड, ही स्मैश्ड, एंड ही बेसिकली ही सेज पुट हिज फीट ऑन द लीव्स. तो उसने अपने पैरों को सॉफ्टली उन लीव्स को पुश किया, स्क्रैम्बल किया विद हिज फीट, उसके ऊपर स्टेप ऑन किया, एंड ही लिसन्ड टू दैट वॉइस. सो ही इज एंजॉयिंग द नेचर, राइट. ही स्टार्टेड विस्लिंग स्लोली, धीरे धीरे उसने विसल करना शुरू किया. कैसे विसल किया? अपने दोनों टीथ के बीच में से विसल किया. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विसल्स. कई लोग सीधा फेस ऐसे करके विसल भी कर लेते हैं, एंड कई सम हैव टू रोल देयर टंग एंड डू समथिंग. सो ही वाज जस्ट बिटवीन देयर टीथ इजीली वो कर रहा था. ओकेजनली पिकिंग अप अ लीफ एज ही पास्ड, फिर उसने चलते चलते एक लीफ उठाया चलते हुए. फिर ही ऑब्जर्व्ड स्केलेटल पैटर्न इन द इनफ्रीक्वेंट लैम्प लाइट्स. सो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स थे, तो वो भी इनफ्रीक्वेंट थी, कभी आ रही थी स्ट्रीट लाइट, कभी नहीं थी, कोई चल रही थी कोई नहीं चल रही थी. तो ही पिक्ड अप अ लीफ एंड ऑब्जर्व उसका पैटर्न, उसका स्केलेटल पैटर्न. स्केलेटल पैटर्न इज बेसिकली द वेन्स, कि वो वेन्स कैसे जा रही हैं उस स्लीव्स में, एंड उसको ऑब्जर्व करता है इन द डिम लाइट ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स. एंड ही वेंट ऑन स्मेलिंग इट्स रस्टी स्मेल, क्योंकि वो उतर चुका है तो रस्टी स्मेल्स होती हैं लीव्स की, स्पेशली ऑटम सीजन में. तो ही स्मेल्स द लीव, ही इंजॉयज द नेचर. सो ही इज नेचर लविंग. ओवर हियर यू कैन गेट टू नो अबाउट हिज कैरेक्टर. Hello in there, he whispered to every house on every side as he moved. तो जैसे जैसे चल रहा था वो जाते जाते hello in there, he speaks this thing to the houses, right? What's up tonight on the channel 4, channel 7 and channel 9? Where are the cowboys rushing? And do I see the United States cavalry over the next hill to the rescue? So ये जो है, these are the basic channels. Television, उस टाइम पे तो टेलीविजन ही होते थे, they were not like computer screens and everything. तो ये says कि उस टाइम पे टेलीविजन होते थे, एंड ये सारे शोज हैं जो वहाँ पे आ रहे थे. तो वो पूछता है कि इस वक्त चैनल 7 पे क्या हो रहा है, चैनल 4 पे क्या हो रहा है, चैनल 9 पे क्या हो रहा है, आज काउबॉयज किधर को जा रहे हैं, आज यूनाइटेड स्टेट्स कैवलरी क्या वो हिल्स तक पहुंची कि नहीं पहुंची. सो ऑल दीज क्वेश्चंस. द स्ट्रीट वाज साइलेंट, लॉन्ग एंड एम्प्टी. There was no one. It was void, it was monotonous, it was lifeless. So street silent थी, लंबी थी and empty थी, and only his shadow moving like the shadow of a hawk in the mid country. And he was only the person moving. So ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसे shadow of a hawk is a like eagle, बड़ा bird that is scavenger basically, that can attack. तो मिडल ऑफ द कंट्री एक शेडो है उस हॉक की, ऐसा लग रहा था वो जो मैन चल रहा था. इफ ही क्लोज्ड हिज आईज एंड स्टूड वेरी स्टिल फ्रोजन, he could imagine himself upon the center of a plain and a wintry, windless Arizona desert, with no house in 1,000 miles and only dry river beds and the streets for the company. So he says, अगर वो अपने चलते चलते अपनी स्ट्रीट में खड़े होकर अपनी आइज क्लोज करता एंड इमेजिन करता, तो ही कुड इमेजिन हिमसेल्फ कि वो एक एरिजोना फॉरेस्ट में है जो ड्राई है, विंटरस है, जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, उसकी रिवर बेड्स ड्राई हो चुकी हैं, आसपास कोई घर नहीं है, सिर्फ स्ट्रीट्स ही हैं उसे अकम्पनी करने के लिए. सो ही कुड, यू कैन इमेजिन द लाइफलेसनेस ऑफ द सिचुएशन, कि कैसे ही फील्स सो अलोन, कि यहाँ पे कोई है भी नहीं है, लाइफलेस है, ग्रे है. सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज सेइंग दैट एवरीवन देयर इज लाइफलेस, राइट. सो what is it now? He asked the houses, noticing his wristwatch. 8:30 p.m. Time for a dozen assorted murders, a quiz, a review, a comedian falling on off the stage. So he says, अभी टाइम क्या होगा? 8:30. अब वो पूछता है कि what is it now? अब क्या आ रहा है टीवी पे? Is it that comedians अपने स्टेज से उतर रहे हैं?
क्या डजन असॉर्टेड मर्डरर्स वाला शो आ रहा है, क्या क्या कहते हैं क्विज आ रहा है, क्या एक रिव्यू आ रहा है. सो थिएटिकल रिव्यू इज बेसिकली थिएटिकल एंटरटेनमेंट, यू कैन लाइक से इट लाइक अ मूवी नाउ. ठीक है. Was that a murmur of laughter from within a moonlight house? Moonlit house? Moon white house. Yeah. So he says कि एक ना हाउस से लाफ्टर की आवाज है कि जैसे कोई हंस रहा होता है. He hesitated but went on when nothing more happened. So he stood there. उसे थोड़ा हुआ कि कोई है क्या है, बट अगर जब थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ, he moved on. He continued his path. Now, he stumbled over a particularly uneven section of the sidewalk. So, stumble means lost balance. So, even we sometimes stumble because of कि unevenness है रोड पे. So, हमारा पैर थोड़ा कई बार मुड़ जाता है, but हम गिरते नहीं हैं, but गिरते गिरते बचते हैं, जिसे हम कहते हैं. So, he stumbled on a sidewalk over a particularly uneven section of sidewalk. Sidewalk के ऊपर एक uneven सा section था, उसके ऊपर वो stumble किया. The cement was vanishing under the flowers and the grass. तो जहाँ पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं ना, जगहें होती हैं, इफ यू टॉक अबाउट साइडवॉक सीमेंट वाली में, तो वहाँ पे सीमेंट कम हो रहा था और ग्रासेस उग रही थी. इन 10 years of walking by night or day for thousands of miles he had never met another person walking, not once in all that time. So he says कि उसे 10 साल हो चुके थे चलते चलते, and he had never met another person walking on the streets. उसने इतनी सारी माइल्स कवर की थी, thousands of miles वो चल चुका था, बट उसको आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि he met a person walking and not at all कि कोई बंदा सिर्फ वॉक कर रहा है. So he is the only one that was walking. He came to a clover leaf intersection which stood silent where two main highways crossed the town. So क्लोवर लीफ इज लाइक कि लीफ की तरह, लीफ के क्लोवर की तरह रिजेंबल करने वाला एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया जहां से दो तरफ को हाईवेज को रोड्स जाती थी क्रॉस द टाउन. ड्यूरिंग द डे इट वाज थंडरस सर्ज ऑफ कार्स. वहाँ पे दिन के टाइम में तो बहुत भरा रहता है, भीड़ रह रही थी सारा दिन, कार्स इधर से उधर जा रही है. द गैस स्टेशन ओपन होते थे एंड अ ग्रेट इंसेक्ट रसलिंग एंड सीजलेस जॉकिंग for position of the scabbards, a faint incense puttering from their exhausts. So he says कि दिन में ऐसा लगता था जैसे इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं, राइट. बीटल्स, इतना ज़्यादा रश, गैस स्टेशन ओपन होते थे, इंसेंस पुटरिंग फ्रॉम एग्जॉस्ट, मतलब ऐसा लगता था कि बस खत्म हो गए, हर चीज़ आ चुकी है. skimmed homeward far directions, हर कोई इधर उधर जा रहा है. but now these highways too were like streams of dry season. but at night it's like कि बस कुछ है ही नहीं. ड्राई सीजन की स्ट्रीम्स जो सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं वो ड्राई सीजन में बिल्कुल सूखी पड़ जाती हैं. सो इसे इसकी ऐसा ही ये जो हमारा हाईवेज हैं सारे, रात के टाइम पे ऐसा ही लग रहा है कि ये स्ट्रीम्स हैं ड्राई सीजन की. ऑल स्टोन एंड बेड एंड मून रेडियंस, सिर्फ स्टोन्स हैं और मून की लाइट है, नथिंग एल्स. ही टर्न बैक ऑन द साइड स्ट्रीट सर्कलिंग अराउंड टुवर्ड्स हिज होम. वो घूमता है, अपना टर्न अराउंड करता है एंड ही डिसाइडेड लेट्स गो होम. तो वो घर जाने लगता है. ही वॉज विद इन अ ब्लॉक ऑफ हिज डेस्टिनेशन, अपने घर से थोड़ा सा ही दूर था. व्हेन द लोन कार टर्न्ड अ कॉर्नर क्वाइट सडनली. तो जा ही रहा होता है, थोड़ा सा ही दूर होता है कि एक कार आके उसे स्टॉप कर देती है. ही स्टूड suddenly and flashed a fierce white cone light upon him. तो उसकी लाइट एकदम से बहुत fierce, बहुत ज़्यादा sharp, angry लाइट आती है, वाइट लाइट आती है. He stood enraged, वो startled हो जाता है, shocked हो जाता है. Not unlike like a night moth stunned by the illumination and drawn towards it. So he was shocked कि ये क्या है, ये कौन सी लाइट आ गई है. So वो उसे थोड़ा inquire करने की भी कोशिश करते कि क्या चीज़ है, because he was shocked with the light. A metallic voice calls to him. Important. So metallic सी आवाज आती है. Stand still. Stay where you are. Don't move. जहाँ पे है वहाँ पे ही खड़े रहो. जहाँ सीधा हिलना नहीं, वहाँ पे ही खड़े रहो जहाँ पे हो. He halted. वो stop हो गया. But put up your hands. अपने हाथ ऊपर कर लो. This was a police car. If you come to know, थोड़ा सा ही आगे. But he said, वो बोलने लगता कि लेकिन योर हैंड्स अप और वी विल शूट. कार कहती है
कि अपना हाथ ऊपर कर लो वरना आई विल शूट द गन। तो ही द पुलिस ऑफ कोर्स, बट व्हाट अ रेयर इनक्रेडिबल थिंग। सो उसे पता लग जाता कि ऑब्वियसली पुलिस है, मेरे को हाथ ऊपर करने को कह रही है और कह रही है कि अगर मैं शूट कर दूंगी अगर हाथ नहीं ऊपर किया, तो ऑब्वियसली दिस वाज पुलिस। बट ये रेयर था, इनक्रेडिबल था, बहुत ज़्यादा इनकम्पेरेबल थिंग थी उसके लिए। इन अ सिटी ऑफ 3 मिलियन, तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी की 3 मिलियन की सिटी में देयर वाज ओनली 1 पुलिस कार लेफ्ट। तो 3 मिलियन लोगों की जो सिटी है उसमें सिर्फ एक ही पुलिस कार है। Wasn't that correct? क्या ये अच्छी बात नहीं है? Ever since a year ago 2052 द इलेक्शन ईयर, तो 2052 में इलेक्शन हुए, तो उसका कहता कि उस साल के बाद से द फोर्स हैड बीन कट डाउन फ्रॉम 3 cars to 1। पहले 3 कार्स होती थी 3 मिलियन के लिए, अब 1 कार है 1 मिलियन के। क्राइम वॉज एबिंग, देयर वॉज नो क्राइम इन द सिटी। क्राइम था ही नहीं, क्राइम खत्म हो रहा था। There was no need now for the police, save for this one lone car wandering and wandering the empty seats. So he says कि अब पुलिस की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि क्राइम ही नहीं था, बिकॉज लोग अपने आप में ही बहुत इंडल्ज थे, सेल्फ ऑब्सेस्ड थे। तो ही सेज कि ये तो अच्छी बात है कि क्राइम खत्म हो रहा है। लेकिन ये देखो ना कि 3 मिलियन की सिटी में देयर इज ओनली 1 पुलिस कार, जो भी पहले 3 थी अब 1 हो गई है, एंड उसके पास भी कोई काम नहीं है। ही इज जस्ट वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट्स अलोन, राइट। Your name, said the police car in a metallic whisper. He says कि अपना नाम बताओ। He couldn't see the men in it for bright light in his eye. लेकिन लियोनेल में जो है ना, वो उसके अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं देख पा रहा था, बिकॉज उसके आंखों में लाइट पड़ रही थी, काफी सारी ब्राइट लाइट थी। लियोनेल मेड, he said. So the person said कि मेरा नाम लियोनेल मेड है। Speak up. So car says जोर से बोलो। Speak up, speak loudly. लियोनेल मेड, तो दोबारा से वो रिप्लाई करता है that my name is लियोनेल मेड। बिजनेस और प्रोफेशन, कार पूछते कि तू क्या करता है, व्हाट इज योर बिजनेस, व्हाट इज योर प्रोफेशन। आई गेस यू वुड कॉल मी अ राइटर, इसे इसकी मैं एक राइटर हूँ, तो शायद मेरे को राइटर कह सकते हो। नो प्रोफेशन, सेड द पुलिस कार एज इफ टॉकिंग टू इटसेल्फ। तो उसने अपनी लिस्ट चेक की जहाँ पे सारे प्रोफेशन लिखे थे, तो वहाँ पे राइटर जैसा कुछ था ही नहीं, बिकॉज नो वन रेड बुक्स एनी मोर। सो ही सेज नो प्रोफेशन, तो यू आर अनएम्प्लॉयड। द लाइट हेल्ड हिम फिक्स्ड in the museum specimen, needle thrust through chest। तो ऐसा लग रहा था जैसे लाइट बिल्कुल एक स्ट्रेट, लाइट वाज नॉट मूविंग। तो इसे कि एक स्टैचू की तरह, जैसे म्यूजियम में स्पेसिमेंस होते हैं, वैसी तरह लाइट बस कॉन्टिन्यूसली उसको स्टिल करके रखना चाह रही थी। यू माइट से दैट, सेड मेड। तो जब उसने कहा कि यू आर प्रोफेशनलेस, यू आर नो प्रोफेशन, यू आर अनएम्प्लॉयड, सो लियोनेल मेड सेड या यू कैन से दैट, यू माइट से दैट। He hadn't written in years. उसने कई सालों से कुछ लिखा भी नहीं था। Magazine and books didn't sell anymore. कोई खरीदता ही नहीं था magazine and books. Everything went on in the tomb-like houses at night now. Now वो कह रहा है कि कोई बुक्स तो खरीदता नहीं था, बिकॉज हर कोई अपने हाउसेज में ही अपने में मस्त है। He thought continuing his fancy, तो वो कहता है अपनी इमेजिनेशन में वो सोच रहा है ये सारी चीज़ें। द टॉम्स इल लिट बाई टेलीविजन लाइट्स, क्योंकि टेलीविजन पे सारे लोग हैं। वेयर देयर वर पीपल सैट लाइक डेड, द ग्रे और मल्टी कलर लाइट्स टचिंग देयर फेसेस। सो लोग बस जैसे डेड पीपल की तरह स्टिल बैठे हैं टीवी के आगे, और टीवी की जो लाइट्स है, कभी ग्रे लाइट कभी मल्टी कलर लाइट, वो उनके फेसेस पे फ्लैश कर रही है, बट नेवर रियली टचिंग देम। बट वो टच नहीं कर रही, ऑब्वियसली जस्ट फ्लैश कर रही है। No profession, said the phonographic voice. So number 2 characteristic of the voice. Number 1 was metallic. Number 2 is phonographic. He said, he's saying, what are you doing out? तेरा कोई profession तो है नहीं, तो फिर तू बाहर क्या कर रहा है? Walking, said Leonard Med. Leonard Med says कि मैं चल रहा हूँ. I'm just walking. Walking? He is astonished. The car is astonished. So वो astonished की तरह बोलता है, चल रहा है तू? I'm just walking, he simply said, but his face felt cold. So लियोनार्ड में कहता हाँ मैं सिर्फ चल ही रहा हूँ, आई एम जस्ट वॉकिंग। सो हिज फेस फेल्ट कोल्ड, जैसे ही वाज annoyed, you can say, from the car. Walking, just walking, walking. So this is what astonishment, you can say. Let's see how just walking is seen as so astonishment, कि चलना is very, you can say, surprising for the car or surprising for the people present there. Walking, just walking. Yes, sir. Walking where? For what? So the car asked that तू चल क्यों रहा है, कहाँ को जा रहा है, and why are you walking? So Med says, walking for air, walking to see. I am walking to get air, fresh air, and walking to see around.
योर एड्रेस, वो पूछती है व्हाट इज योर एड्रेस, वेयर डू यू लिव, 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट. सो ही सेज कि अपना एड्रेस बता दो. सो लियोनार्ड लिव्स 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एड्रेस. इट कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज, राइट. And there is air in your house, you have air conditioner, Mr. Med. So वो पूछे तेरे घर में हवा है, you have an air conditioner, तेरे घर में AC लगा है. Mr. Med said yes. And you have a viewing screen in your house to see with, क्या तुम्हारे घर में एक टीवी है, viewing screen है जहाँ से तुम देख सकते हो. Leonard said no, उसके घर में टीवी नहीं है. No, there was a crackling quiet in that itself and was an accusation. So ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस पे ब्लेम डाल रहा है कि तेरे घर पे टीवी नहीं है. Are you that much poor? Yeah. Crackling quiet is basically onomatopoeia again. Crackling being sound and quiet like soundless. So it is an onomatopoeia. Are you married, Mr. Med? Leonardo says no, I am not married. Not married? Said the police voice. Behind the fiery beam, the moon was high and clear among the stars, and the houses were grey and silent. The car says, you are not married. He was shocked. कहाँ से आवाज आ रही है? फायरली बीम, जो ब्राइट लाइट है कार्स की उसके पीछे से आवाज आ रही है. द मून वॉज हाई, मून ऊपर था, स्काई क्लियर थी, स्टार्स दिख रहे थे, एंड अमंग द ग्रे एंड साइलेंट हाउसेस. ठीक है. Nobody wanted me, said Leonard Med with a smile. वो हंसा कहता मेरे को तो कोई चाहता ही नहीं था. Nobody wanted to marry man like me, जिसके पास ये regressive tendencies है कि वो अपने walk करे and all. Right? Don't speak useless. You are spoken to. Unless you are spoken to. वगैरह जब तक मत बोलो जब तक मैं पूछूँ ना कुछ. So the car says that speak only when you are asked. Leonard Med waited in the cold night. He waited. Then he said, "Okay, I'll stop. I'll not speak anything." He waited. Just walking, Mr. Med. वो फिर से पूछती है, तुम सिर्फ चल रहे हो? Leonard Med says, "Yes, but you haven't explained for what purpose." तो पर कहते हैं कि तूने बताया नहीं कि why are you walking? Tell me why are you walking? But I explained for air to see and just to walk. He said, मैंने तुम्हें बताया है that I am walking for air to see around and I'm just walking just to walk. Have you done this often? क्या तुम इतने ये रेगुलरली करते हो, ऑफनली करते हो? He says every night for years. So कितने years? 10 years. So he said even before that कि वो 10 सालों से चल रहा था and he had never met a person before. Right? So he says yes, I have been walking every night for several years. The police car sat in the corner of the street in its radio throat fainting humming. So again the third type of sound made by the car, radio throat fainting humming. Well, Mr. Med, it said, is that all? He asked politely. So Mr. Med says, क्या हो गया? अब मैं जा सकता हूँ? Yes, said the voice. Here, we can get a sigh, a pop. The back door of the police car sprang wide. Get in. Car said, yes, मेरा हो गया जितना मैंने पूछना था पूछ लो. अब तुम क्या करो? ये लो. उसने क्या किया? अपना डोर ओपन किया, पीछे का बैक डोर ऑफ द कार, एंड उसको कहा अंदर बैठो. सो लाइक द पुलिस सेज टू अ क्रिमिनल कि अंदर बैठो टू द कार, इन द कार, बिकॉज यू आर अरेस्टेड. ही सेज दैट कम इनसाइड, गेट इन द कार. वेट अ मिनट, आई हैवंट डन एनीथिंग. Leonard says, मैं क्यों बैठो? I have not done anything wrong. Get in. I protest. So car says get in. Leonard says, I protest. I disagree. Mr. Med. So the car with a little bit of anger says, Mr. Med, get in. Right? So he walked like a man suddenly drunk. So he is like now acting like he is drunk. So he walks slowly. As he passed the front window of the car, he looked in as he expected. There was no one in the front seat, no one in the car at all. So वो जा रहा है साइड से, बिकॉज सामने से तो उसके आगे लाइट पड़ रही थी, he couldn't see. बट जब साइड से जाता तो फ्रंट रो पास करते ही उसे दिखता है कि अंदर तो कोई है ही नहीं कार के. just as he expected कि everything is so robotic, no one is like, you can say, no one, even the police is not even sitting in their cars. Right? Get in. He put his hand to the door and peered into the back seat. So car door को खोला and बैठ गया. Which was little cell like a prison. छोटा सा prison था. A little black jail with the bars. थोड़ी सी bars लगी हुई थी. ऐसे लग रहा था जैसे वो छोटा सा jail हो. It smelled of riveted steel. It smelled of harsh and deceptive.
it smelled too clean and hard and metallic. So ये क्या दिखा रहा है? Sterilized, emotionless, artificial, कि everything was like nothing was soft there. So not nothing was soft there is basically everything was lifeless, emotionless. So it was riveted steel. So ये जो सारे important words है like riveted steel, harsh antiseptic, too clean and hard and metallic. So it is artificial. Now if you had a wife to give you an alibi, said the iron voice, but वो कहता अगर तो तेरी वाइफ होती तो there was would be a person जो तेरा सपोर्ट कर सकता, शायद तेरे को छुड़वा सकता, लेकिन तेरी तो वाइफ है ही नहीं है. वेयर आर यू टेकिंग मी? लॉरेंट मैथ आस्क्स, तुम मेरे को लेके कहाँ जा रहे हो? द कार हेजिटेटेड और रेदर गेव अ faint wricking click as if information somewhere was dropping car by punching slotted card under electric eyes. So car was hesitating first, then he says to the psychiatric center for research on regressive tendencies. So he says an asylum, a mental hospital where research on regressive tendencies, old school habits and what we say old fashioned things is done. He got in the door shut with a soft thud. वो बैठा अंदर, डोर क्या है वो सॉफ्ट धीरे से बंद हुआ. द कार रोल्ड थ्रू द नाइट एवेन्यूज फ्लैशिंग इट्स डिम लाइट्स अहेड. कार चली धीरे धीरे अपनी लाइट्स को फ्लैश करते हुए. दे पास्ड वन हाउस ऑन वन स्ट्रीट. अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद एक घर आता है. वन हाउस इन द एंटायर सिटी ऑफ द हाउसेज दैट वर डार्क. एक अकेला हाउस एक उस सिटी में जहाँ पे हर एक हाउस बहुत ज़्यादा डार्क था. बट दिस वन पर्टिकुलर हाउस हैड ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक लाइट्स ब्राइटली लिट. सो इस घर की सारी लाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइटली चल रही थी. एवरी विंडो लाउड येलो इल्यूमिनेशन. हर विंडो से एक लाउड येलो लाइट आ रही थी. स्क्वेयर एंड वार्म इन द कूल डार्कनेस. तो इस कूल सी डार्कनेस में वार्म स्क्वेयरनेस लाइवलीनेस शो कर रही थी. दैट इज माई हाउस सेड लियोनार्ड मेड. लियोनार्ड मेड सेज दैट इज माई हाउस. सो सी ही सेज कि बाकी सारे लोग ऐसे हैं वैसे हैं. सो वी आर समटाइम्स लाइक दैट, वी आर हिपोक्रेट समटाइम्स कि हम कहते हैं बाकी लोग ऐसे हैं बाकी लोग ऐसे हैं, और but in the end when it's time to show ourselves हम भी वैसे करने लग जाते हैं. But Leonard May proves कि that he is different from everyone. वो चाहता है कि liveliness हो, लोग उससे बात करें. He is full of life, right? No one answered him because it was a metallic car. It was supposed to speak whenever the information was given. The car moved down the empty riverbed streets of the way and leaving empty streets with the empty sidewalks and no sound and no motion with the rest of the chill November night. So the car goes down. There was no one in the streets and the streets were left monotonous and there was just no motion all around. The streets were empty. And with this we complete our chapter, The Pedestrian. I hope you like this explanation and you understood everything. If you have any query you can ask me in the comment section. I'll be sure to reply all of your queries and I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye. Thanks for watching. Please hit the like button and subscribe to the channel because that would make up all of the effort that I've put up on creating this video. And I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye and thanks for watching.